जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है मेरे लिए, जी क्योंकि जब से मैं भी हिंदुज्म को एक प्रिज्म से देखती थी, जो मेरा ब्राह्मिक लेंस है। जी जी और इसके लिए मैं काफी हद तक हिंदुओं को खुद ही जिम्मेदार भी मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद ने ही कहा कि एक रिलीजन है, उसको एज अ रिलीजन, ना कि एज अ कल्चर और इसकी तरह प्रोजेक्ट किया। तो आपने अपने बुक में जो पेज नंबर 281 है, वहां पे एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है कि किस तरह से जो पहले हिंदू रिफॉर्मर थे, जी राय रॉय जी, उन्होंने जिस तरीके से स्क्रिप्चर्स का एक अप्रोच लिया हिंदुज्म की तरफ, उससे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। जी एंड आगे जाकर के उसी ने शेप लिया है, जहाँ पे हम हिंदुज्म में भी ईआरपी की बात करते हैं और हिंदुज्म को एक एज अ रिलीजन ट्रीट करते हैं। तो आप इससे हमें समझाइए थोड़ा, एंड प्लीज थोड़ा लेंथ में समझाइए, और क्यों जरूरी है इस चीज को एक्नॉलेज करना। जी। देखिए, इस्लाम में एक अंतर है दीन और मजहब के बीच में। ओके, मजहब is effectively seen as religion, whereas deen is seen as something that is universal. Okay, so both words are not to be used interchangeably, and they don't mean the same thing. Okay, now in that sense, and I'm not trying to be controversial here, I hope I don't get any jutas for this, that धर्म जो है वो मजहब नहीं है। धर्म conceptually is much more expansive in a deen sense. Okay, रिलीजन मजहब है। तो भारत में हम जब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म को तीनों को रिलीजन के तरह ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनके बेसिक सोच के साथ बहुत ही अन्याय करते हैं। हिंदू धर्म जो है संप्रदायों का जमघट है। इट इज एन एग्लोमरेशन ऑफ मल्टीपल संप्रदायस, और जो बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से फैले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खलीफा है या फिर कोई पोप है जो बाहर ऊपर से कह रहा है कि तथास्तु। ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, हर जगह पे अपने लेट्स से संप्रदायों के अनुयायी होते हैं, जो उस पे और लेट्स से दे प्रैक्टिस, दे एक्सपीरियंस, उससे ट्रेडिशंस निकलते हैं। ओके, लेकिन सबका एक बाइंडिंग फिलॉसफी है कि वो धर्म के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते हैं। एंड धर्म का मतलब ये नहीं है इट्स रिलीजन। धर्म इफेक्टिवली मीन्स दैट विच सस्टेन्स द अर्थ। Therefore, whatever is needed to preserve the cosmic balance is seen as dharma. So, if you go further, there are three words that we look at. One is called Rita, the other is called Satya, the other is called Dharma. Rita जो है, that is the concept of righteousness. But it is typically so in most Hindu philosophies, आपके पास three divisions होते हैं: manasa, vacha, karmana, which is in thought, in speech, and in action. Okay, so Rita applies to soch, Satya applies to speech, Dharma applies to karma, to application. Okay, so आपसे ये पूछा जाता है कि इस संदर्भ में what is the right decision to be taken in the interest of righteousness, उस कॉन्सेप्ट को आप धर्म मानते हैं। फिर आपसे यह पूछा जाता है कि धर्म के प्रमाण क्या है, इसके मापदंड क्या है, बेंचमार्क्स क्या है। वहां से बात निकलती है वेदों की, बाकी चीजों की, कि धर्म की परिभाषा कहां पे है, इसका स्रोत कहां से है, व्हाट डज इट कम फ्रॉम। दैट इज वेयर दिस एंटायर डिस्कशन कम्स फ्रॉम। सो आई एम नॉट सेइंग देयर इज नो एलिमेंट ऑफ बिलीफ, देयर इज अ ह्यूज एलिमेंट ऑफ बिलीफ, but these are significantly spiritual knowledge traditions, which is why everything has a sampradaya and a paddhati, which is a tradition and a path. And because it has a tradition and a path, हर ट्रेडिशन का अपना एक गुरु होता है, अपना एक डेटी होता है। तो गुरु शिष्य परंपरा इसीलिए हिंदू धर्म के लिए इतना इंटेग्रल होता है। इस्लाम में स्पेशली as far as the Wahhabi beliefs are concerned, there is no concept of an intercession. There cannot be someone standing between God and the person. That is their serious belief, which is why they don't have a problem. They have a problem with Sufism. They have a problem with peers. They have a problem with mazars, because they are saying there cannot be such interceders.
क्योंकि हमारे मुताबिक सिर्फ दो ही लेट्स से पिलर्स हैं, दो ही स्तंभ हैं, एक है कुरान, दूसरा है हदीस। अहले कुरान गोज इवन फर्दर, बेसिकली सेइंग हदीस का भी कोई मायना नहीं है, सिर्फ कुरान का है। ओके, सो व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, धर्म ऐसे नहीं होता है। Because first of all, dharma is towards introspection and realization, not salvation but liberation. Okay, तो इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, that is what your entire goal has been. Now when you look at it from that perspective, I'm much more able to relate to the philosophy of the Africans prior to its Christianization and Islamization, or for that matter Latin America or pre-Christian Europe. क्योंकि जब अलेक्जेंडर यहां से गया था, वो यहां से फिलॉसफी भी लेके जा रहा था। So Greek philosophical revolution to a significant extent is to be attributed to its contact with Bharat after the invasion of Alexander. He met so many people. He got his teachers here. Considering that, I've basically said, once the Christian comes here, मुसलमान और हिंदू दिमाग में एक सवाल पैदा हो जाता है, which is, यार ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमसे कितना आगे है, and therefore we say he is ahead of us because his religion is scientific and progressive. Okay, तो साइंटिफिक टेम्पर को हम वेस्ट के साथ और उसके रिलीजन के साथ हम जोड़ देते हैं। ये सवाल नहीं पूछा जाता है कि भैया बाइबल में उतना ही अनसाइंटिफिक नेचर है जितना बाकियों में है, अगर आपको लगता है तो। अगर आपके हिसाब से बाकियों के मिरेकल्स को मानना नहीं चाहिए, तो इमैक्युलेट कंसेप्शन को आप मान ही नहीं सकते हैं किसी भी हालत में, जो क्रिश्चियनिटी की बीज सोच है, which is the root cause there. Okay, you can't think of the fact that he was resurrected if according to you this is not scientific, right? So then two things happen. Raja Ram Mohan Roy leads the Indian Renaissance and he basically says हम बाइबल के हिंदू पर्यायवाची ढूंढेंगे और उसके हिसाब से हम हमारे हिंदू सोच को समझेंगे. So we start looking for what is the central scripture, what is the codified scripture. जो लिखा नहीं है वो है ही नहीं. वेद को श्रुति माना जाता है. श्रुति इज रेवलेशन, जो मुंह से निकला है और जो सुना गया है. तो अगर आपके हिसाब से वेद लिखे नहीं जाते तो वेद थे ही नहीं. राइट, दिस इज द फिलॉसफी. Syed Ahmad Khan goes through the very same experience in the 1860s after his visit to Cambridge because his son Syed Mahmud had to study in Cambridge. वहां से वापस आके ये पहले अपने इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करते हैं, द अलीगढ़ सोसाइटी. And he is supported in this thing by the Nawab from Bengal. Two people, Nawab. So Syed Amir Ali is one person and there's another person. Both of them are effectively saying, because you see the literary society, Muslim Islamic literary society was set up first in Bengal. Okay, उसको देख के अहमद खान says मुझे भी यहाँ पे शुरू करना पड़ेगा. और फिर उनको लगता है छी छी भारतीय इतने गंदे हैं, हमारे सबसे बेहतरीन लोग उनके गंदे लोग से गंदे हैं. ये उन्होंने लिखा है अपने लेटर्स में, जिसको मैंने सेकंड बुक में रिप्रोड्यूस किया. वो कहते हैं मतलब द बेस्ट ऑफ आवर रेसेस आर वर्स देन द पुअरेस्ट ऑफ द रेसेस. एंड देयरफॉर ही सेज अब हम कुरान को साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे to show that Quran and Islam are not at loggerheads with progress and scientific temper. So that starts. So you have to realize that both the Hindu reform movement and the Muslim reform movement in Bharat is the product of the inferiority after exposure to English education. इसको मैं और डिटेल में सेकंड बुक में समझाता हूं, क्योंकि see in this book I have reproduced Raja Ram Mohan Roy's letter, but how he was treated as the patron saint by the Congress for their reform project of Bharat, Congress के बुक से मैं निकाल के बता रहा हूं. So that explains the attitude of the Congress to Bharat. भारत अभी इन ब्राउन साहिब्स का रिफॉर्म प्रोजेक्ट बन जाता है. So जो कार्य जो है गोरों ने शुरू किया, अब ये आगे लेके जाएंगे. The very first meeting of the Congress in 1885 in December, you know what was the language requirement? English. जिनको अंग्रेजी आती है वही आएंगे. Why are you then wondering and surprised that भारत का जो संविधान है अंग्रेजी में लिखा गया था? भाई ये खुद कह रहे हैं. So therefore, this mindset goes with the ERP test in the Supreme Court, which says हम essential religious practices को ही संवैधानिक प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि बाकी सारा सब कुछ जो है बेकार है. जिसको ना कुरान आता हो, ना वेद आता हो, ना संस्कृत आता हो, ना अरबी आता हो,
वो बैठ के सिखाएगा कि व्हाट इज द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जिन ज्यूरिसडिक्शन से आपने इन टेस्ट को अपनाया है वो खुद कह रहे हैं कि जब एक कम्युनिटी कहती है कि उनके लिए ये प्रैक्टिस एसेंशियल है, आप उसको स्वीकृति नहीं देंगे, आप मानेंगे कि हाँ ये आपके लिए एसेंशियल है, लेकिन ये संवैधानिक नहीं है या है, ये डिसीजन आप ले सकते हैं। विच इज टू से, you cannot disagree with the community on whether a practice is essential to its religion, but whether the practice is constitutional or not is the limited question you can address. तो आप किसी भी समुदाय या संप्रदाय के प्रैक्टिस पे टिप्पणी नहीं करेंगे, आप उस पोजीशन को मान के चलेंगे, लेकिन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसको स्वीकृति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। दैट इज द लिमिटेड क्वेश्चन। सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस? ट्रिपल तलाक के केस में यह ढूंढना बेकार था कि कुरान में ट्रिपल तलाक का कोई बेसिस है या नहीं। ये पूरा एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहिए था। सिमिलरली सबरीमला के सिलसिले में ये पूछना बेकार है कि भगवान ब्रह्मचारी है या नहीं। आपको तंत्री से ज्यादा थोड़ी पता होगा, ये जनरेशन से ये काम कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि ये प्रैक्टिस वहां के लिए एसेंशियल है, लेकिन उसके बाद संविधान के संदर्भ में इसका होना या ना होना क्या नतीजा निकलता है, यू लुक एट इट दैट वे। Similarly, in the context of, let's say, the dargah in Mumbai, what is that? Haji Ali. Dargah. You don't need to again find out what is the position of menstruation in Islam. This is not necessary. Whether it reads it as a purity or impurity, you accept the position of the Maulvi who's filed an affidavit. उसके बाद आप पूछिए, can this happen in Bharat today or not? Ask that question. That way, you are avoiding a lot of controversy. Again, the same rule for hijab. मान भी लीजिए कि हिजाब जो है एसेंशियल है, then the question will be in an educational institution which is a secular institution, government funded institution, ये होना या ना होना, ये is it possible or not? Then you'll have to deal with the Sikh turban also. You'll have to deal with the Shikha also. If a Brahmin student suddenly comes with a Shikha, तब आप क्या करेंगे? तब आप ये थोड़ी कहेंगे कि चोटी जो है आपके रिलीजियस डायरेक्शन को दर्शाता है, इसको काट के आइए। These are the problematic aspects. Right. Sai, you've already kind of touched upon a lot what I wanted to ask with this question. Oh, my apologies. No, that's okay. No. This is my own personal analysis and I would want your thoughts on it. So, growing up in Pune, having Islam as my faith, but I've grown up amongst Hindu friends and they're the closest. So culturally, one sees oneself as an Hindu. So I've always enjoyed this fact of, at least I believe that I understand the two societies really well growing up in the two civilizations. Now, the fact is that I think that the very strength, and that's a beautiful philosophical paradox of Hinduism, is that the very strength of duality of thought, which gives a very liberated life where you're not bound down by, you cannot think this, you cannot think that, and you can have 100 truths too, and nobody is forcing you to, so it's not a suffocated life. So very fluidity is also its biggest weakness, because that allows a lot of thoughts which it's not sure is working towards the very annihilation of the core system. Right. And the other system, and this is no judgment point, this is just how civilizations work. Abrahamic faiths have closed systems, right? And when the closed system and the fluid system comes together, that is where the clash starts. And then there are other, combinations that arise out of it. Right. Now, someone like you who's so passionate and, is amongst the new age, digital age, heralding the renaissance of the Indic civilization, do you think this very pattern of 5,000 years of fluidity will suddenly, they will develop the, the consciousness that we need some walls, there needs to be some boundaries for healthy relation? And do you think suddenly the other 2,000-3,000 years of closed systems will suddenly say, we can be a little fluid? So you think that is possible on an idealistic level, realistic level? What is it? Can the two systems just in the phase of physics ever come to a middle ground where there is, they don't want to change the fluid guy? Like, I don't want to change the fluid guy. I think that way a lot of our problems would have got solved. So on the allegation that I'm part of the Indic Renaissance, the point is, I'm not. I'll tell you why. Most of us are reacting to protect our childhoods and the culture that we have grown up with. So मैं किसी सेवियर कॉम्प्लेक्स के साथ बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ बचा रहा हूँ अपने चाइल्डहुड को, ताकि मैं उसको आगे दे पाऊं to the next generation. It's a very, very selfish motive here. Okay. So, and that is my strongest incentive. And therefore it explains my passion.
because I'm fighting for something real. As a practicing Hindu, not as an activist, not as a propagandist, I have no such interest. Okay. Only then there'll be more stakeholders in this particular abhiyan. When you're able to tell them this is where it is practically hurting you. कल आप दही हंडी सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, पटाखे फोड़ नहीं पाएंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सवाल पूछना जरूरी है. Now, answering the question of closed versus open, there is one conceptual disagreement here, and allow me to explain that. Think of Islam and Christianity as having one vessel each. Okay? And to some extent, within each of those vessels, you have multiple denominations. Okay? Hinduism has 108 vessels. And each of those vessels has very rigid rules. It's not as fluid. इसका मतलब ये है कि बाकी, let's say, religions में, or in the religions, you have limited options. Here you have more options, but each option has very clear defined rules of what is in and what is out. इतना भी open नहीं है. तो for instance, मैं आपको बताता हूँ. I come from the Shaiv Sampradaya. I am a Shaivite. I am an Iyer. So हमारे टीके ऐसे ही लगेंगे. शादी के वक्त जो फेरे होंगे या जितने भी लेट्स से रिचुअल्स होंगे, हमारे और अयंगार्स के बीच में अंतर होता है. ओके. तेलुगुस और तमिल्स में डिफरेंस होता है. बिकॉज ईच ऑफ दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डोमिसाइल. एक एक जगह पे थोड़ा थोड़ा करके ये बदल जाता है. भारत ऐसा, मतलब इट्स अ सब कॉन्टिनेंट. हर 15 किलोमीटर में डायलेक्ट बदल जाता है. राइट. सो दैट इज द प्लेस. Considering that, there is a huge scope for diversity, which is a product of, let's say, weather, climatic conditions, availability and whatnot. South में मंदिर के अंदर पंडित जी जो हैं, he has to be bare chested. ये आप नेपाल में थोड़ी अपना सकते हैं, पशुपतिनाथ में या उत्तराखंड में. तो वहां पे वो स्वेटर तो पहनेंगे. और in those places उनका जनेऊ भी बाहर होता है. We can't even imagine that. जनेऊ अंदर ही होता है, बाहर नहीं आ सकता है. But these are certain changes that come with it. Now, what I'm trying to say is, Hinduism is not an open architecture. It is a closed yet diverse and plural architecture. Otherwise, we end up doing injustice to the very concept of sheer hardcore rigid sampradayas. जहां पे उनके अनुयायियों से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो बाकी किसी ट्रांजैक्शन में दिखे या ना दिखे, 3 ट्रांजैक्शन में दिख जाएंगे. जन्म, मरण और शादी दिख जाएंगे आपको 100%. So there is a community of Tamil Naidus. Most people think of Naidus as Telugus, but these are people who were the generals of Krishnadeva under the Vijayanagara Empire. तो ये आपको साउथ में बहुत सारे जगह पे दिखेंगे. मदुरई में भी दिखेंगे, कोयम्बतूर में दिखेंगे, आंध्रा में भी दिखेंगे. Most of them are Vaishnavites who are expected to wear the Janeu, by the way. क्योंकि Janeu is not limited only to the Brahman. Most people, in fact, even the Kumhar used to wear it at some point, even under the British period. Okay. The Lohars used to wear it at some point. Okay. तो ये जनेऊ आज के डेट में कभी नहीं पहनेंगे, लेकिन शादी के दिन पहनते हैं, तब उनका दिख जाता है. इट्स नॉट एज इफ इट्स अ कास्ट मार्कर, जाति मार्कर, पहचानो और कुछ करो, ऐसा नहीं है. यू आर टेकिंग अ सर्टेन ट्रेडिशन फॉरवर्ड. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के डेट में हिंदुइज्म को एक ओपन सिस्टम कहने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके पोजीशंस अप्रोप्रिएट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई इसमें दरवाजा है ही नहीं. It is not a hippie bohemian culture meant for the 60s Woodstock festival. ऐसा नहीं है ये. So for instance, I'll give you an example from what Pandit Ravi Shankar said. हमारे लिए the musical instruments are gods. As a practitioner particularly, it's very sacred. Because you see this as the Veena of Saraswati ji and all that. What did the hippies do? Because they thought Hinduism has no rules. Concerts में ये वीणा को जलाते थे.
after playing it because they think it's like a rock concert. Guitar hai to jalao usko. Ravi Shankar used to get, he's like, what is going on? This is your mata, you can't do this. This is where your vidya comes from. ये किताबों पे बैठ भी जाएंगे, किताबों पे पैर भी रखेंगे, जला भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. It doesn't make a difference to us. For us, book is a book is a book. You can't do this. So what I'm trying to say is ये rules जो है ingrained होते हैं. Hinduism is a diverse concept in terms of giving plurality. So assume कि 108 घड़े हैं and आपको लगता है कि मुझे और एक घड़ा चाहिए. आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उस संप्रदाय के रूल्स आप नियुक्त करेंगे. तो आप 108 में करप्शन नहीं करेंगे, आप 109वां करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर आप में हिम्मत है और टू यूज योर लैंग्वेज कुवत है, देन यू अट्रैक्ट पीपल टू से मेरा भी अपना एक पंथ है, आ जाओ. दैट इज हाउ द पंथ्स हैव कम अबाउट. प्रूफ इज सोसाइटल एक्सेप्टेंस. अगर समाज आपके पंथ को मानने के लिए तैयार है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता. आप बोलते रहिए, रोते रहिए, चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं हो सकता. सो देयरफॉर इट इज अ सिस्टम दैट सेज ओके यू कैन ब्रांच आउट फर्दर, लेकिन बेसिक्स के साथ खिलवाड़ नहीं होगी. बेसिक्स का मतलब ये है कि अगर लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट दैट देयर इज इफ यू सब्सक्राइब टू द आस्तिक फिलॉसफी, तो वेदों को फाइनल माना जाएगा. तो आस्तिक नास्तिक थीस्ट नॉन थीस्ट एथीस्ट नहीं है. आस्तिक नास्तिक इज बेस्ड ऑन वेदर यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द वेद एज द फाइनल अथॉरिटी. So Buddhists and Jains, the difference would be their position with respect to Vedas are distinct from the position of the theists, of the Astikas. Therefore, the manner in which we have now understood, let's say, Hinduism is like the Christian rebelling against the church. उसमें भी Christianization हो चुका है. हर चीज का उल्टा करेंगे तो ये अपने आप में इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि हिंदुइज्म में कोई रूल ही नहीं है. किसने कहा रूल नहीं है? बहुत सारे रूल्स हैं. Which is why every Guru Sampradaya made it a point to somehow capture the rules in one way or the other. In very crude terms, if the comparison is a new denomination in Christianity can come about, but every denomination will have its own rules. But agar aapne, the difference would be you can't be a member of two denominations at the same time, in Islam as well as in Christianity. आपको मुर्दागढ़ भी नहीं मिलेगा. You won't even get the कब्रिस्तान. Marriages are determined based on that. In Hinduism, you can be a Shaivite who goes to Tirupati. You can marry Vaishnavites. It has become even more open now. All of this is possible. So it is not mutually exclusive between two denominations in terms of you being a member of both. That is the distinction between Islam and Christianity on the one hand and Hinduism on the other. I think that sums up. That's a very, very critical core aspect. Sorry, I just had a counter, Sai, on that. Please. When we look at it on the larger canvas of the world, right? Whereas the polytheist allows the others to thrive within it, whether that's the Muslims, Christians, and Jews and everyone, and that's why India has 6 major world faiths within it. Right. The reverse doesn't happen. Right. How do you see that? देखिए, पॉलिथीस्ट ने अपना दरवाजा खुला रखा है. इससे ज्यादा उनको सिर्फ एक, दे कैन डू ओनली वन मोर थिंग, विच इज टू डाई, विच इज व्हाट इज गोइंग ऑन. दरवाजा भी खोल दिया है. वी आर सेइंग नो प्रॉब्लम, लिव, जस्ट डोंट इंटरफियर विद अस. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, इससे ज्यादा अकोमोडेशन क्या हो सकता है कि हम अपनी जीवन प्रणाली छोड़ दें? वो तो नहीं हो सकता है. तो अभी कॉम्प्रोमाइज उस ग्रुप से आना चाहिए जहां कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश ही नहीं है. आप किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्या आप अपने बेसिक, लेट्स से, कैन यू लेट गो ऑफ द बेसिक पोजीशन दैट देयर इज नो अदर गॉड? यू कांट. द मोमेंट यू लेट गो ऑफ इट, विल यू रिमेन अ मुस्लिम? एंड द मोमेंट you are willing to tolerate the existence of temples, are you not tolerating idolatry? Is that permissible? You have to decide. I will go to the next contentious issue. हमारे जितने भी consecrated places हैं वो तो दे दो. हमारे हैं, हमारे देवता वहां पे हैं, हमारे लोग तो मर गए, उनको आपने बेचा. सेंट्रल एशिया में और अफगानिस्तान में हर जगह पे जाके आपने बेचा है.
स्लेव ट्रेड पे आपने पूरा अपना इकोनॉमी कायम किया है। हमारे आर्टिजन्स को बेच बेच के आपने हर जगह पे मस्जिद बनाए हैं। द प्रोलिफरेशन ऑफ फैंटास्टिक मस्जिद्स इन सेंट्रल एशिया कोइंसाइडेड विद स्लेव ट्रेड फ्रॉम भारत। ऐसा नहीं है कि हमारे आने से पहले इतने बड़े मस्जिद बन गए वहां पे। ताजमहल तो यहीं पे बना और बाहर कहीं बना है? उसके बाद आपने सबके हाथ काट दिए। सो गिव अस आवर प्लेसेस, because you see masjid as a place of prayer, we see temples as a place of worship, as a place of consecration. So when वहां पे जाके बात रुकती है, I'll give you a very simple example. I am a Shaivite. मेरे लिए अयोध्या is important, but Kashi is very important. Mylapore temple in Kapalishwar temple in Chennai is very important. My Kuladevta temple is very important because I owe an obligation to it. वो हमें वापस दे दो, ये सवाल कौन करेगा? इस पे जाके बात रुक जाएगी। Because this will not be seen as a compromise by the other side. This will be seen as a bloody defeat by the other side. That is the problem. इसको आप समझौता मानेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने इसको, if you think of it as defeat, हार आपने इसको माना, then where is the scope for compromise? बात वहीं पे जाके अटक जाएगी। Because as far as I am concerned, for me there cannot be any peace until our places are returned under any circumstances. मुझे हमारे मंदिर हर जगह पे, हर 40,000 जगह पे वापस चाहिए, और हम आपको दूसरा जगह दे देंगे, क्योंकि वक्फा जितना भी लैंड है वो मंदिरों से ही चुराया गया है। प्लीज वो भी आप ले लो, वहां पे आप खड़ा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एनरोलमेंट्स, लॉट ऑफ दीज वक्फ्स, Babri Masjid, I'm so sorry to speak, was created in the Waqf only after the destruction of the temple. So I am making a legitimate statement here that historically, where have these lands come from to the invader? It has come only from the local. So use that land and build wherever you want. Just give us back our places. So जो compromise की बात अगर कोई करता है कि 3 दे दो बाकी रख लो, I am not going to agree to it. That is my very clear position. आई थिंक इससे पहले हिंदुज्म के बारे में इतने अच्छे से सिंपल वर्ड्स में मुझे किसी ने समझाया नहीं है। So a lot of things get cleared for me, like seeing Hinduism as a very free society or free of any rules is not there actually. It is like it allows you to have your own rules if you can create. It allows you to have a parallel things if you want to create, but there is rule for every community. Yeah, so that is like something. एक एग्जांपल दे देता हूँ. I'll just give you one example. This will help you. Okay. Yeah. Most Hindus have concept of 3 devatas. Okay. Mm-hmm. एक होता है ग्राम देवता जो आपके नेटिव प्लेस को प्रोटेक्ट करता है. Mm-hmm. एक होता है आपको कुल देवता जो आपके कुल की रक्षा करता है, और एक होता है आपके इष्ट देवता जो आपके नेचर के हिसाब से आप चुनते हैं. Okay. तो फ्रीडम यहाँ पे ये होता है कि आपके जो ड्यूटीज होते हैं टुवर्ड्स दी ग्राम देवता एंड कुल देवता, दे कैन नॉट बी चेंज्ड. वो आपको निभाना पड़ेगा क्योंकि आप एक आइडेंटिटी को आगे ले जा रहे हैं. लेकिन आइडेंटिटी के बाहर आपका अपना एक नेचर होता है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, विच इज इष्ट देवता. अगर आप उग्र हैं, आप अग्रेसिव हैं, तो आपके लिए एक डेटी है. आप शांत हैं तो उसके लिए एक डेटी है. आप चपल हैं तो एक डेटी है. सो देयरफॉर इष्ट देवता वुड इफेक्टिवली be the open architecture aspect of Hinduism. The Gram Devta and the Kul Devta would be the closed aspect of the Hindu system. Right. But I wanted to also talk about Charvaka philosophy. Don't you think that is like a rebellion of जो Christianity का है, those people who don't want to even believe in a religion. So there here in Hinduism you have that also. You can be a follower of Charvaka and still be a Hindu. जी, तो मैम इसमें एक डिस्टिंक्शन ये है कि चार्वाकास को आप भारतीय मान सकते हैं लेकिन हिंदू मानना मुश्किल होगा. दोनों में अंतर है. ओके. Which is why I think we are making a slight mistake in conflating it, which is to say, आप भारत के हैं, in that sense you're a Hindi, which is say like al Hindi you say, therefore you can say he's a Hindi in that sense. बट आप हिंदू हैं या नहीं वो डिपेंड करता है कि आप धर्म को कैसे मानते हैं, और धर्म मजहब नहीं है. ओके. चारवाकास को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उनको टॉलरेट किया गया था. ये अंतर है. इसका मतलब ये है
कि अपोस्टेसी के नाम पे और मुर्ताद के नाम पे इनके गर्दन नहीं उड़ाए गए थे या इनको सर के बल गिराया नहीं गया था। ओके, तो टू दैट एक्सटेंट फ्रीडम है। ओके, लेकिन द वन प्लेस वेयर मोस्ट पीपल शुड एक्चुअली रिकॉग्नाइज दिस, जब चारवाकाओं ने अपने हदों को पार करने की कोशिश की और वो देवनिंदा पे सीधा चले गए, तब उसका रिएक्शन भी हुआ था। सो इसका मतलब ये है, आप क्रिटिसाइज कीजिए और आप ये कहिए कि मेरा इस पे कोई भरोसा नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, आप पे कोई थोपा नहीं जाएगा, नो प्रॉब्लम, डन। लेकिन आपने आगे जाके उसका परिहास किया तो देवनिंदा के पोजीशंस को भी रिकॉग्नाइज किया है। इसीलिए मैंने आनंद रंगनाथन के उस डिस्कशन में कहा था कि ये कहना कि हिंदुइज्म में ब्लास्फेमी का कोई पोजीशन नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पोजीशन कहां से आ रहा है, ये किसने पढ़ के बताया आपको? ओके, हो सकता है कि इस्लाम के जितना कट्टर नहीं है, हो सकता है, लेकिन उनको इतना तो कहा। सो इफ यू सी, द ट्रेडिशनल पोजीशन हैज बीन engage with civility and respect even if you disagree. When that line is crossed and when you come out with ludity, then there will be some kind of a social reaction. उसका संविधान से कोई लेना देना नहीं होगा, उसका सिर्फ संस्कृति और देवों से लेना देना होगा, period. Which means Charvakas can exist, can thrive, can have their own institutions. They even have the right to propagate. None of these are available to apostates in Islam. To that extent, the accommodation is possible. To that extent, it is open. But अगर आपने let's say जानबूझ के किसी स्क्रिप्चर को उठाया, उसको जलाया, ओके, या फिर आपने मंदिर में आके उसको दूषित करने की कोशिश की, उतने भी उदारवादी हम हो नहीं सकते, तब तो जवाब मिलेगा। Sai, I जो want मेरा to. Sorry, Amna, go ahead. जो मेरा अगला सवाल है, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है। जी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी मैंने देखा है कि आप उसका विरोध करते हैं, उसका आपका एक आर्ग्यूमेंट है कि इसमें सबसे ज्यादा हिंदू समुदाय को ही जी, करेक्ट है। नुकसान होगा। प्लस एक जो कंसेप्ट है, आई नो कि आप बोलोगे ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंसेप्ट है, कि स्टेट इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करे और उसके साथ डील करे और लॉ वैसे फ्रेम हो। तो मुझे ये लगता है कि ये बेस्ट वे है, क्योंकि रिगार्डलेस आप किस रिलीजन से आते हो, किस पंथ से आते हो, उसके रिगार्डलेस स्टेट आपको इक्वल ट्रीट कर रहा है। तो उस वे में ये बहुत अच्छा एक मतलब इट्स वेरी नॉट इवन नाइस, प्रैक्टिकल ऑल्सो। और अगर हिंदू समुदाय को इसके लिए ज्यादा एक मान लेते हैं कि हाइपोथेटिकली बहुत ज्यादा उनको उनके हितों का नुकसान होगा, लेकिन क्या देश के हित के लिए कई बार आप अपनी कम्युनिटी के हित को पीछे नहीं रख सकते हैं? बिकॉज दिस वुड बी वेरी ग्रेट फॉर नेशन। ठीक है मैम, हिंदुओं के बगैर या उनके ना होते, इफ हिंदूज डोंट एग्जिस्ट देयर इज नो भारत। ओके, allow me to say this with a lot of respect and civility. I will never accept a Muslim majority India. I will never accept a Muslim majority state. And that's my problem with Kashmir. Because it means serious problems for Hindus, historically speaking. There are very few instances, if I may say this with a lot of respect for both of you and even your other friend from Jindal Law School. What's her name? Zeba Zoria. Exactly. Okay. You represent the micro minority. You are heavily outnumbered. तो मैं आपको रेफरेंस पॉइंट मान के पूरे कम्युनिटी को मैं फ्री पास नहीं दे सकता। ओके, क्योंकि अगर आप जैसे लोग होते तो ये इस पॉडकास्ट की जरूरत ही नहीं होती और आपकी जरूरत भी नहीं होती। यू आर स्टैंडिंग आउट बिकॉज यू आर आउटस्टैंडिंग, पीरियड। ओके, नाउ इन विच केस द क्वेश्चन वुड बी, Hinduism is the native faith of Bharat. Neither Islam nor Christianity are native to Bharat, because the epicenters and the focal points of both these religions don't come from Bharat. That is a factual statement. That is not a bigoted statement. Okay. So, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब भी लेट्स से फाउंडेशन धर्म में हो और वो सब पे इक्वली लादा जाए, नो प्रॉब्लम, यूनिफॉर्म कीजिए, लेकिन उसका स्रोत जो है वो हिंदू ही हो सकता है।
which means कॉम्प्रोमाइज उनको करना पड़ेगा जिनकी सोच बाहर की है. Here the son of the soil rule will have to prevail, and I am not on the son of the soil rule, I am on the सोच of the soil rule. Okay, क्योंकि ये रेस का इशू नहीं है, क्योंकि other than the Ashrafs everybody is from local in one way or the other. Therefore अगर मैं इसको रेस के बेसिस पे करूं तो उनसे जवाब ये आएगा लेकिन हम भी तो यहीं की पैदाइश है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. औरंगजेब भी यहीं की पैदाइश है, तो मैं तो उसको भारतीय नहीं मानता. राइट? Makes no difference to me. If Hitler would have been born in Israel, would he be considered a Jew? No. Right? So therefore my position would be, as long as dharma is the basis for uniform civil code, I am okay with it. देश हित को धर्म के हित से अगर आप ऊपर रखेंगे तो जब भी धर्म के साथ अन्याय होगा तब अन्याय ही होगा. दूसरा, देश हित को मजहब के हित से ऊपर रखने का काम जो है बाकियों को करना चाहिए, क्योंकि समझौता हमने हमेशा किया है और हम करते आ रहे हैं. तो इसका जो ओनस है ये बाकियों पे है, हिंदुओं पे नहीं है. जब बाकी समझौते के लिए आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि हम इन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तब हिंदू सोच सकता है या सोच सकती है. तब तक हम सोचने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते. टू, एज फार एज आई एम कंसर्न, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में घूम फिर के बात करना बेकार है. व्हाट इज द इशू? इशू इज मल्टीपल मैरिजेस एंड इशू इज नॉट जस्ट सक्सेशन. क्योंकि frankly speaking, how the Muslims go about, let's say, giving property to their children is not my business. It doesn't make a difference to me. मुझे उससे कोई फर्क, रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता है. मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है और एक ही फोकस है. भारत के डेमोग्राफिक बैलेंस को किसी भी हालत में आर्टिफिशियली और जानबूझ के आप उल्टा नहीं कर सकते हैं. And anything that comes in the way of that particular destination, according to me, is both anti-dharmic, anti-Hindu, and therefore anti-Bharat. भारत में और हिंदुओं में सिर्फ एक ही बिलीफ है, धर्म से देश है, देश से धर्म नहीं है. क्योंकि ये हमारा देश इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हमारे धर्म का स्थल है. भारत is treated as a sacred geography because of our devatas, which is why America will never be a sacred geography. No other part of the world can replace Bharat in that sense. That is the difference between Islam's mentality and Hinduism's mentality. You can keep going from one geography to another, keeping one place as your focal point. But हमारे लिए यही है. We are not the people of the sky, we are the people of the earth. और हम इस भूमि से जुड़े हुए हैं. ये हमारी कर्म भूमि नहीं है, ये हमारी पुण्य भूमि है. So put it in your language. This is the equivalent of Darul Islam. This is Darul Dharma. Okay? And all of the places are at best Darul Karm or Darul Aman. Where we are persecuted, it is Darul Harb. Right. I think this debate can be very interesting अगर अलग से हो, because I have a lots of other point. But क्योंकि अभी बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा, तो खालिद, you can ask your question. Yeah. So Sai, I want to ask this. When you look at today West Bengal and Kerala, two states where the communist and Islamists have the power of the mind controlling the masses, how worried are you about these two places 30 years from now with the demographic change? Or how hopeful are you that the Indic Renaissance will finally mount a challenge and we will not see anything which could be very problematic in these two particular places? Because it's very clear that the communists and Islamists have an absolute stranglehold. And it's not even I'm not even speaking from a position of being the ideological opponent. It's just the way it is, right? So how do you see these two particular states? खालिद जी, 30 साल देखने की जरूरत नहीं है. 24 और 2030 में आपको पता चल जाएगा कि हम किस ओर जा रहे हैं. Okay. You don't need to wait for 30 years. All right. And I have hinted at this in the second book कि we are looking at accelerated timelines now.
If you read the history of the Mopla outrage and the Hindu genocide which was undertaken there, it was preceded by Khilafat activists wearing khaki and taking out parades and marches. Today, the PFI is doing the very same thing. And it's talking about 1921 and it's talking about the episode of 1921. और CA के टाइम पे ये नारे निकले थे, हमने अभी तक 1921 को भूला नहीं है, हमने ना खिलाफत को भूला है, और हमने अपनी तलवारें जो हैं, we have not thrown it into the Arabian Sea. That was a very clear. ये नारेबाजी चल रही थी 2021 में, which is 100 years from Mopla rebellion. It was not a rebellion, it was an outrage. Okay. So the population of Hindus is just about 50-55% now. It is not a coincidence that ISIS के लिए वहां से बहुत सारे लोग भेजे जा रहे हैं. It's not a coincidence that Sri Lanka के bomb blasts are being traced to Tamil Nadu and Kerala. So, without revealing too much, you will get your answers for this in chapter 9 of the second book. क्योंकि वहां पे मैंने अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ने की कोशिश की है, और प्रयत्न ये हुआ है कि इसका भविष्य पे क्या असर होगा, वो सवाल मैंने खड़ा कर दिया है वहां पे. Here's a nugget for you. The very same districts which were the hubs of the Mopla rebellion were combined together to form a single district by the very first communist government, EMS Namboodiripad, and that district is Malappuram. And it was opposed by everybody, including the Congress, then to say, ये Malappuram नहीं है, ये Mopla स्थान बना दिया है अपने भारत के अंदर. So this must tell you the cozy relationship between the left and Islamists. Right. So I think last question मेरा आपके जो बुक आ रही है उसी के बारे में जी, थोड़ा बता दीजिए कि क्या आपने बेसिकली क्या उद्देश्य से लिखा है उसे. जी, मैंने पहले बुक के इंट्रोडक्शन में ये लिखा था कि पहला बुक जो है 1919 में खत्म होगा, दूसरा बुक जो है 1935 या 36 में खत्म होगा, और तीसरा बुक जो है 51 में खत्म होगा. इस बुक के दूसरे बुक के लिखने के दौरान पूरा मतलब स्क्रिप्ट ही चेंज हो गया, क्योंकि पहले बुक में मैंने कोलंबस से लेके 1919 तक की बात की है, दूसरे बुक में मैंने नादिर शाह के इन्वेजन के बाद से लेके शाह वलीउल्लाह दहलवी से लेके खिलाफत के अंत तक दिसंबर 1924 तक लिखा है. एंड इसमें आपके सारे जो बीज हैं पाकिस्तान के जो उगने शुरू हो गए थे उसके बारे में मैंने लिखना शुरू कर दिया है. और अब ये ट्रिलॉजी नहीं रहेगा, ये अभी एक क्वाड्रोलॉजी बन जाएगा, क्योंकि 25 से लेके 46 को मैं एक बुक मानूंगा, और 46 से लेके 50 जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट चल रहे थे एंड पैरेलली नरसंहार हो रहा था पाकिस्तान और बंगाल में, डायरेक्ट एक्शन डे चल रहा था, उसके बारे में लिखूंगा. क्योंकि मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जब लोगों को दिन दहाड़े मारा जा रहा था इन अर्बन प्लेसेस, नॉट जस्ट इन सम रूरल प्लेसेस, तो क्या आप ऑस्ट्रिच के तरह अपने सर गाड़ के आपने संविधान की बात करनी शुरू की थी, या फिर आपके संवैधानिक चर्चाओं पे इसका कुछ असर पड़ा कि नहीं? Were you at least sensitive to the massacres and the genocides? Broad daylight massacres in lakhs, and the gang rapes where women were being, let's say, hung like meat hooks. I mean, let's say like pieces of meat and butchered. All that ये आप सोच के कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, या फिर जिन आवाजों ने इसके बारे में बोलने की कोशिश की उनको दबा दिया गया था? ये सवाल पूछूंगा मैं चौथे बुक में. तो श्रृंखला ये है, अगला बुक अगले अगस्त में नहीं आएगा, बिकॉज इस बुक ने has made me, how do I put it, it has taken a lot of my energy, emotionally speaking. Reading some of those chapters were extremely traumatic.
coupled with the discipline of writing along with my professional commitments. तो मैं अभी फिर से बुक लिखने की स्थिति में नहीं. I will not write for another 8 months. भारत का 75वां साल होगा रिपब्लिक का in 2025. So चौथा बुक उसके साथ कोइंसाइड करेगा in January 2025. तीसरा बुक आएगा January 2024. Insha Ganesha. So we will see. Sai, your next book, you're launching it day after tomorrow. If you tell the viewers about it. So the book is called India, Bharat and Pakistan, a constitutional journey of a sandwiched civilization. The color has been chosen for a purpose, green and white. The title has been chosen for a specific reason, with Bharat between India and Pakistan. The use of the word sandwiched in the subtitle has been chosen for a particular reason. Considering the success of the first book, which I'm grateful for, the first print run will have about 25,000 copies. Usually they go for about 5,000 to 10,000 copies for the first print run. But given the captive audience of the first book, and because it's continuation of the first book, at least 25,000 copies in the first print run. 23rd of August, Constitution Club at 6 p.m. is when the launch is. And the invitation is open to everyone, but it's a hall with a capacity of 300. And I expect a lot of students to turn up there. So people who wish to come are expected to come at least 5:30, warna jagah nahi milegi. Because Anand is going to be there and he's a crowd puller. He's one of the finest influencers we have, and I'm grateful that he's on this side. Then uske baad book signings shuru honge Delhi mein 27th and 28th. September 3rd को DU में एक event होगा. फिर September 10 और 11 को बैंगलोर में event होगा. September 17 को दिल्ली के कॉलेज में फिर से एक इवेंट होगा. 24 और 25 को पुणे और मुंबई. Then in October, I will cover my cities, Hyderabad, rather Bhagyanagar and Chennai. And November, I think 5th and 6th, there is the Indore Lit Fest. So the idea is to cover about 10 to 11 cities. Last time I covered about 16 cities. But because last time virtual hearings were still going on, I could balance both. And this time physical hearings have resumed. So I can do these tours only on weekends. And I have to do it on alternate weekends. Otherwise, I'll be given talaq at home. So I have to be very careful about that. So this book, I hope people will find it extremely relevant to the current times. क्योंकि मेरे हिसाब से हम फिर से इतिहास का पुनरागमन देख रहे हैं. We are living through history as it repeats itself. Okay. And therefore, I would want to see क्या भारत इस बार पिछले बार की तरह मिस्टेक्स करेगा या इस बार सही नतीजे या सही डिसीजंस लेगा. That is my question. And ये बुक पिछले बुक से 150 pages बड़ा है. The first book was about 483 pages. The second book is about 632 pages. And given the content, I have peppered it with references. Every sentence almost has a reference wherever there's a factual statement. Almost 1,400 references. If you exclude the repetitions, you're looking at least 600 unique references. The first book had about 350 references. So even here it is double. It's about 279,000 words. But one thing I guarantee, first book was a bit academic, thoda theoretical tha. Second book is, you will not be able to put it down. This is my guarantee. All right. So Because seems we have another bestseller. That once you start, you will have to go through it because every chapter, तो मैंने क्या किया है, 9 chapters रखा है, लेकिन हर chapter को multiple sections में तोड़ा है. And I've chosen pictures for each chapter accordingly, like I did in the first book, so that it represents what the chapter is talking about. And जो हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जितना हमारे दिमाग में हवा है, वो सारा कम हो जाएगा. So I wanted to know, I mean, this is your first book, like the bestseller. It's been a bestseller for a year now, right? India, that is Bharat. How many books did you read? 100, 200, 300, 400 or 500? No, so it's like this. The good part of being a litigator is you develop the ability to zero in on the material. Okay. So some core books, I read them in entirety. Some books, I would read them in portions.
And some of the debates and references, my research team will put it together. So this was never a one-man show. It has never been a one-man show. I have two brilliant researchers with me, Shaktiki Sharma and Vanya Agarwal, which is different from my commercial litigation team, whose only job is to work with me on constitutional matters, on matters of public international law, on matters of history. So they have done a fantastic job of getting on board my vision. And most importantly, my job would be to basically say, मेरे हिसाब से इस कालखंड में ऐसा कुछ हुआ होगा, यहाँ से कुछ मिल सकता है, इसको निकाल के दीजिए, वो निकाल के देते हैं. Okay. But the core books which have formed my theoretical basis, I've read them. Okay. Can you give us a number? Rough. For history would be about, let's say, 9 different authors. Okay. And in terms of, let's say, the political science aspect of it and the colonization aspect of it, Indu Vishwanathan had introduced me to about 4 authors. Sumita Ambastha had introduced me to 3 authors, including Arturo Escobar. Then Balagangadhar and Ruber, most of their articles and books were read. And debates, because it's my home turf, I can't say मेरे juniors ने दिया, मुझे ही पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने पढ़ा था पूरा. So this would be the rough number. The good part is about 40% of the citations are journal articles, hardcore journal articles. Okay. जो let's say Indian Science of Indian Academy of History, इनके जो conferences में पेश किए गए थे या उनके journals में publish हुए थे, उनसे निकाला था मैंने. Okay. So this would be roughly the number for the first book. The second book, you can multiply it by at least 2. Wow. क्या बोल रहे हो सर? कह होपफुली हमें भी साइन बुक मिले. जी जी बिल्कुल, मैं आपको भेज दूंगा, पक्का मैं भेज दूंगा. Done. Right. So we leave everybody with this thought that these are the difficult conversations on the civilizational front which never happen, and if they would ever happen, then maybe there can be results which will not be similar to what we've seen in the past. So thank you so much, Sai, for joining us and speaking on all the issues, speaking on your bestseller. Wish you well for your second book, and maybe these are the conversations India needs on that level, where we can actually have different ideologies, different systems, so that it can actually regain its glory, and there's more peace, coexistence, and it can find its real true value in the world. That would be my thoughts. Amina, what would you say? I would just say कि पहले तो ये बुक पढ़ूंगी मैं, दूसरा आज मुझे आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला है. So I will think about those issues, specifically जो enlightened era की बात हुई है. I think that is something I need to think again about. Also Hinduism के बारे में भी मुझे first time एक different approach मिला है. So these are the things I'm taking from this conversation, and I will further see कि how I will shape my mindset and everything. So for me, it's a very, very enlightening. I won't say कि I 100% agree on everything. There are disagreement, but yes, this is very enriching experience for me. So let me actually thank your platform for giving me an opportunity, because I'm 100% sure that some of the things I say or the manner in which I say them may not be entirely palatable. Okay. And therefore, I don't operate under the illusion that everything that I say will find acceptance. I hope that's never the case, because then I will never be challenged on my positions. And that I think is always a bad thing for learning. Okay. I say this with a lot of humility, although I'm not a humble fellow, which is that the book was written as a learner, not as an expert. And every book is being written only as a student. So those portions which relate to the law, I will consider myself an advanced student and an advanced learner. And those portions which don't relate to my home territory in terms of the law, I'm looking at myself at a student, but at a notch lower. Okay. 2, I think the work that Amna ji and Khalid and your other colleagues are doing is fantastic. I hope and pray that you live long, that no harm befalls upon you, and that you continue to be able to speak your mind. Whether or not we agree, I think it's important that your voices are heard. And I hope that you find a way to reconcile between your identity as a Muslim and Bharatiyata, and may that template be adopted widely if possible.
And I would request you to read the second book, not because you're Muslims, but because I think it's important for all of us to have these conversations. The one thing that I learned from Dr. Indu Vishwanathan was that not everything needs to be approached from an adversarial perspective. There could be some meeting grounds, but at the same time, जहां पे meeting ground नहीं है, उसको भी recognize करना बहुत जरूरी हो जाता है, because then the only question will be not to how to bridge the gap, but to how to deal with that disagreement. Would you want to deal with a disagreement with a sword, or would you want to deal with a disagreement through civil dialogue, which is to say, I don't agree, end it, that's it. Okay. So this, I think your platform is doing. I was really looking forward to this conversation, primarily because I've watched some of your previous conversations, and I'm happy that you took the time out to read the book, and you have marketed it at least 4 times. So thank you very much. Thank you so much. Amna just gave it away कि उसने नहीं पढ़ा because mostly मैंने पढ़ लिया तो. But sure, she'll read it as well. All right, absolute pleasure to have you, J Sai Deepak, and wish you all the best. And we're sure the second book will be even a bigger blockbuster. And hope to see you more in the future here on the platform and discuss about other issues also under the sun. Thank you so much. Please keep on liking, sharing, and subscribing. Our viewers had said that, you know, the maximum they had spoken in all the comments around the 48 episodes that please get J Sai Deepak, and we were very like, you know, it felt very, it was very humble. We just reached out and he said, yes, I'll do it. So thank you very much. And this is the longest ever we've done. Thank you. Thank you for your